I am Dr. Deepa Dahake, Director of Biozone classes, and I am today coming for the next topic and our new chapter, that is chapter 3, Plant Kingdom for class 11. I am here with you for our ongoing crash course series of NEET 2020. So let's begin with our new topic and new chapter, that is Plant Kingdom. Now you all know about the basic features of plant cell. So I am not going towards the basic features of plant cell, and directly we start with our plant new topic, that plant kingdom. So here first, before the beginning of plant kingdom, or simply we can say planty, clear? First we go through how the kingdom planty is divided into a different divisions. So first we see what are the different divisions or what is the exact classification of kingdom planty, because in third chapter आप study कर रहे हैं basically algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. So how one can recognize all these kingdom, so all these divisions on the basis of important features in kingdom planty. Okay, so first when we study about the planty, so whenever we use the term plant, that means one imagination picture is develop in our imagination, that is the body which is differentiated into root, stem and leaf. That body is normally we referred as plant, but all the plants are not to be show that kind of body organization, because in some of the lower plants or in some of the lower groups of the planty kingdom, body is undifferentiated, and because of that, on the basis of organization, you remember planty को basically हम कितने parts में divide कर रहे हैं? We divided the planty into two major group. First, you remember, the first is called as Thallophyta. That means the body of the plant is not differentiated. और simply remember, Thallophyta किसको include करेंगे? Thallophyta include those members where the body, plant body is thallus-like. Clear है? So thallus-like plant body, such members are included in Thallophyta. Later we study what is thallus. And the second group is referred as Embryophyta. That means the development is proceed to the formation of embryo. So next we second group we study about Embryophyta. Now Thallophyta. Thallophyta means the plant body is not differentiated, or it is not differentiated in root, stem, leaf. That body is called as thallus. Multicellular mass only you appear in the green color structure, but the entire body is not differentiated into root, stem and leaf. And when the body is not differentiated into root, stem, leaf, such undifferentiated body is called as thallus. So simply when the plant body कैसे यहाँ पे plant body is thalloid and undifferentiated mass, simplest life cycles are present, and generally Thallophyta, one another important feature you remember for objective purpose, the main plant body in Thallophyta, main plant body here means whenever you observe the plant body in our surrounding, so whatever structure you appear or whatever form you appear in your surrounding, that is called as main plant body. So main plant body of Thallophyta is always haploid. Clear? And that haploid plant body, again you remember two terms when we study the plant kingdom. Two terms हम use करते हैं. One we use the gametophyte, second we use the sporophyte. For conceptual purpose you remember gametophyte कैसे होंगे? Gametophyte are the haploid body or the haploid plant body which directly produces the gametes without undergoing in meiosis division. So in Thallophyta main plant body is haploid, और you remember the Thallophyta में जो main plant body है वो आपके पास क्या है? Gametophyte है. Okay. स्पोरोफाइटा आप कहाँ पे पढ़ेंगे? स्पोरोफाइट वी स्टडी इन एम्ब्रियोफाइटा, बिकॉज एम्ब्रियोफाइटा के जो मेंबर्स आपके पास है, those members show the diploid plant body, and when the plant body is diploid it undergoes in spore production, that is microspore and megaspore, by the process of meiosis division. So such parent body are called as sporophyte. So here first देखिए when we study about the Thallophyta, now on the basis of their habitat and evolutionary stages, the Thallophyta divided into two major groups.
algae and bryophyta. Clear? So this thing you remember, algae and bryophytes are included under Thallophyta, because in both the member plant body is undifferentiated. Both are showing gametophyte as a main plant body. The basic difference in algae and bryophyta in terms of habitat. Algae, you remember, they are aquatic in habitat. That means they present in aquatic environment, either fresh water as well as marine water environment. Whereas when we come to the bryophyta, one most important statement you remember, bryophytes are commonly called as amphibians of plant kingdom. So here you remember amphibians of plant kingdom. And secondly, why they are called amphibians of plant kingdom? Because they normally grow on moist soil. So habitat, here you remember, habitat is generally moist soil, but they require the water for the process of fertilization or for the process of male gamete transfer. So this you remember general introduction terms में bryophyta के लिए. Now we come towards the embryophyta. Embryophyta means slowly the body become complex. Body start to differentiate into root, stem and leaf. Therefore here don't we use the thallus word. Thallus only present in algae and bryophyta. Okay. Now when embryophyta आप study करना start करेंगे, तो embryophyta में देखिए one group is there where the embryonal stage is developed or embryo develop but seeds are not produces. This is one of the most important question for the objective exams, that the group of plant or the division of plant where the embryo stage is present but the seeds are absent. So that group you remember, that is commonly called as aspermatophyta. Aspermatophyta means you remember embryonal stage present but these plants are not produces seeds. So seeds are generally absent and the group is called as, or division you can say, pteridophyta. So pteridophyta you remember, pteridophyta means क्या होगा आपका aspermato, they are placed under the aspermatophyta because they show the embryo stage but the seeds are completely absent. When we study about the details about pteridophyta in one next classes, so then we discuss about the different terminology and synonyms for the pteridophytes. Then here the second group is called as spermatophyta. Spermatophyta you remember, spermatophyta का meaning है here the seeds are developed. So along with embryonal development, seeds are present. Clear? That's why the group is called as spermatophyta. Now spermatophyta you remember, spermatophyta is clearly divided into two groups. Either the seeds are present as a naked seeds or without integument seeds present है, and in second group seeds कैसे present है आपके, coated seeds are present. So when seeds are present but seeds किस form में available है, naked seeds, whereas here the seeds are coated seeds. The plant with naked seeds are commonly called gymnosperms. Sperma word we use for the seed and gymno means naked. So here the one category of plant which include this plant producing naked seeds, that is a gymnosperms, and coated seeds. Coated seeds are only present in angiosperm, or you remember they are present in commonly flowering plant. Flowering plant is a common term which we use for the angiosperm. So this classification basically you keep in mind before the individual discussion of algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm, because the confusion is created in between the gametophyte and sporophytic generation. So clear cut division you remember, gametophytes are always haploid and gametophyte produces a gamete by mitosis division. Sporophytes are always diploid in chromosome number and they produces, whenever they produces a spore,
स्पोर किसके थ्रू प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूसेस अ स्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवीजन। द मेन प्लांट बॉडी के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे in algae and bryophyta. You remember main plant body is gametophyte. So whenever you recall the gametophyte, AB उसके साथ यूज करिए। AB आपका स्टैंड करेगा फॉर algae and bryophyta. So main plant body in algae and bryophyta is gametophyte. Whereas in embryophyte, all the groups of embryophyta basically कैसे होंगे आपके? They are diploid in nature. So the in pteridophyta, gymnosperm and angiosperm, the main plant body is diploid in nature, that is called as sporophyte. Okay, so this part you remember. Now we comes towards, now from today onward we discuss one by one. First one we discuss about the algae, then we come to the bryophyta, pterido, gymnosperm. Okay, so first now we continue with the algae. Now all of you know algae predominant habitat. You remember the predominant habitat of the alga is aquatic habitat. So now we begins with algae, the branch of science where we study the details of algae is called as phycology. So this thing you remember, phycology is the branch of branch of science in which one can study about the structure, reproduction and all the characteristic of the alga. ठीक है, individually आप study करते हैं. Now we come towards the habitat. If we come towards the habitat, habitat of algae आप याद रखिएगा, mostly alga जितने भी आपके पास हैं they are aquatic in habitat, but some are कहाँ पे ग्रो करेंगे? ग्रोइंग ऑन स्नो, कॉल्ड एज क्रिप्टोफाइट्स, as well as on moist soil. So this thing you remember, Fristiella. This name you remember, Fristiella is one and only terrestrial alga. So one terrestrial alga you remember, Fristiella. This is the one and only terrestrial alga. You remember the color of snow, the red snow, blue snow, green color of the snow is mainly because of the growth of the different kinds of alga generally. And those type of alga आप किस कैटेगरी में प्लेस करते हैं? They are comes under the category of cryptophytes. Now we come towards the thallus organization. थैलस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से प्रीडोमिनेंट ही क्वेश्चन आ सकता है, प्रीडोमिनेंट हैबिटेट. तो प्रीडोमिनेंट हैबिटेट ऑफ द एल्गा यू रिमेंबर क्या होगा अपने पास? एक्वेटिक हैबिटेट. आफ्टर दैट देखिए, आफ्टर हैबिटेट आप स्टडी करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यू रिमेंबर कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, दैट इज बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड का मीनिंग है रूट, स्टेम एंड लीव्स आर कंप्लीटली एब्सेंट. Only multicellular grade of organization is present, and this multicellular grade of organization के लिए आप एक word use करते हैं, the body of the algae is consist of thallus. Now ये जो thallus आपका है body organization और thallus of the alga, clear? Older books जिन बच्चों के पास होंगे उनके इसमें unicellular forms, diagrams are provided besides the alga. जो literature है उसके besides जो पेज है ऑन दैट पेज डायग्राम्स आर प्रोवाइडेड. सो इन ओल्डर पब्लिकेशंस क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर एल्गा का भी डायग्राम है, बट नाउ द यूनिसेल्युलर बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा. देयरफॉर इन न्यू एडिशंस और न्यू पब्लिकेशंस की जिनके पास बुक्स है उसमें आपको यूनिसेल्युलर एल्गा का लिटरेचर नहीं मिलेगा उस पार्ट में. सो दिस पेज ऑल्सो शो सम मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल. यूडोरिना आपका एग्जाम्पल में आ गया है, यूलोथ्रिक्स आपका एग्जाम्पल में आया है. So at least for that page you go through the new publications of NCERT. Now when we come towards the thallus, तो unicellular को हम यहाँ पर conclude नहीं कर रहे हैं. We only discuss about the thallus is multicellular. Multicellular thallus is either present in the form of colony. So thallus is colonial
और यू रिमेम्बर थैलस किस फॉर्म में होंगे आपके पास, थैलस इज फिलामेंटस. सो एल्गा आइदर शो द कॉलोनियल फॉर्मेशन or the thallus of the alga is present in the form of filamentous structure. Colonial, you remember, one and only alga is there, that is volvox. Colony of volvox objective के लिए याद रखिए, colony of volvox is called as synobium, most important. So colony of volvox is called as synobium. Secondly, the volvox is also called as rolling ball alga. So these are some questions which are repeatedly asked for the volvox. rolling ball alga आप कह रहे हैं because colony are floating and rolling on the surface of water. Colony of the volvox is called as synobium. And the diagram अगर आप appear करते हैं for volvox, so in diagram you appear this globose shaped structure, a large number of unicellular ऑर्गेनाइजेशन के क्लोरेला का जैसे एक यूजुअली डायग्राम होता है, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट हियर एंड द आउटर मेंबर्स शो द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला बट इनर मेंबर्स विथड्रॉ देयर फ्लैजिला एंड इनसाइड द पेरेंट कॉलोनी द आउटर कॉलोनी आर आल्सो प्रेजेंट. वन अनदर क्वेश्चन आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस डायग्राम दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ कॉलोनी आर इंटरकनेक्टेड विद. तो कॉलोनी के मेंबर याद रखिएगा, द मेंबर्स ऑफ कॉलोनीज are interconnected or associate with cytoplasmic strands. तो ये lines आपको appear हो रहे हैं. These lines you remember originally these lines are nothing but the cytoplasmic strand. So this kind of structure you appear for the volvox. Colony is called synobium. Commonly it is called rolling ball alga. Secondly, for volvox you remember volvox is oogamous type of alga. That means the oogamous mode of reproduction is present in volvox. So this part you remember when we study the thallus present in the form of colony. Now we come towards the filamentous alga. Filamentous alga you remember there are two kind of filamentous alga. Either the filaments are unbranched as we appear in Spirogyra, or the filamentous alga maybe show the filaments in branched form. Whenever they are branched, the branching is developed in two patterns, that the branching show the presence of limited shoot as well as the long shoot, or it is also called as branch of unlimited growth or unlimited growth shoot. Simple terms में याद रखिए. So limited shoot, that is the limited shoot is called as short branches, and the unlimited shoot is called long branch. Long branch means lifelong this branch is undergoes in growth or division. Clear है? And it will lead to the production of short branches or dwarf shoot भी word मिलेगा आपको. So dwarf shoot means the branch of limited growth is called as dwarf shoot. Okay. Now the unbranched means the thallus आपका कैसे होगा? Thallus is only filamentous. The vegetative cells are present one over the other. एंड स्पाइरोगायरा यहाँ पर आप याद रखिएगा. इन स्पाइरोगायरा क्लोरोप्लास्ट का शेप याद रखिए. द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फ्लैट एंड रिबन लाइक. दैट्स व्हाई यहाँ पे स्पाइरली कॉइल्ड रिबन लाइक आपका क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, एंड दिस इज द रीजन दैट द नेम ऑफ द एल्गा इज स्पाइरोगायरा. सो दिस थिंग यू रिमेंबर फॉर अनब्रांच. इफ वी कम टुवर्ड्स द ब्रांच्ड थैलस, सो इन ब्रांच थैलस number of examples are there. If you go through your page of that NCERT, the second part में आप देखिए 3 parts में diagram provided. First part is provided 2 diagrams in new NCERT. 2 diagrams are for chlorophyce. Then in next half, third 3 diagrams are provided for phaeophyce. And last में 3 diagrams है. These 3 diagrams for the rhodophyce or red alga. Okay. Now in phaeophyce and rhodophyce, if you appear the structure, the thallus is highly branched, and that highly branched thallus is called as branched filamentous structure. कैरा में आपको इस तरह के appear मिलेंगे branches of limited and unlimited growth. This diagram of कैरा you will appear in class 12th biology book. And reproductive organs are also provided, that is globule and nucleus. So that part we separately study in reproduction.
So these are the limited shoots, and this is one of the central one is a long shoot or the branch of unlimited growth. This is for the Chara. If you appear the structure of Dictyota in diagram, so Dictyota, you remember this is provided in class 12th, and secondly Dictyota का diagram identification के लिए भी आया है, because the important feature of Dictyota that the every time thallus is divided into a two branches or two time division is take place, and that's why the name of the thallus is also Dictyota. So this you remember here, this is for the Dictyota and this is for Chara. So this is a common organization of thallus. Again I recall you, in algae plant body is not differentiated and this undifferentiated body को हम क्या कह रहे हैं, thallus कह रहे हैं. तो ये part I think ये part सबको clear है. ठीक है. For diagrams चार्ट्स के फॉर्म में पढ़ने की थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि चार्ट के थ्रू आप विद इन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन रिकॉल कर सकते हैं और इजी होते हैं चार्ट्स थोड़ा पढ़ने के लिए. ठीक है ना. इट डिसॉल्व ऑल द काइंड्स ऑफ कंफ्यूजन. डायग्राम्स फॉर डायग्राम पर्पस अगेन यू गो थ्रू योर कोर्स बुक ओनली, not to refer any another examples, because we only have a limited time for boosting your preparation. So only follow some guidelines and regularly make a habit to give a time, much more time, more and more time for your studies. So after habitat we come towards, when we study about the algae, so we come towards the reproduction in algae, most important part for the objective. Clear? Now reproduction, when we study, again the three modes of reproductions are here. The first mode of reproduction, as it is now you all are know, vegetative reproduction. The second is asexual reproduction, and the third mode of reproduction is called as sexual reproduction. Sexual reproduction is nearly present in all the alga. Vegetative reproduction as usually take place by fragmentation. So this thing you remember, vegetative reproduction, all of you know what is the meaning of fragmentation. So vegetative reproduction in filamentous alga basically take place by the phenomena of fragmentation. Asexual reproduction you remember is take place by spore formation. So different kinds of spores are produced. Spores again you remember, either the spores are motile spores or they may be non-motile spores. If we study about non-motile spores, a large number of series of non-motile spores are produced. That is not in your syllabus. Harmogonia, achainids, exospores, a variety of non-motile spores are produced in alga. We strictly go through the NCERT, and in NCERT आप किसको study कर रहे हैं? Motile spores. Motile spores are zoospore. Zoospore हम study कर चुके हैं कि why they are endogenous spores, what is the structure of zoospore. तो अगर आपको zoospore को एक बार और recall करना है तो फंजाई का जो सेकेंड पार्ट का लेक्चर है, इन दैट लेक्चर यू कैन स्टडी अबाउट द एंटायर फिनोमिना एंड हाउ डज द जूस्पोर्स आर फॉर्म. So for zoospore, detail of the zoospores you can again go through the lecture of fungi, that is a part 2 lecture for the fungi. Okay, so motile spores are formed in algae, those spores are called as zoospore, and with the help of zoospore generally most of the alga show the asexual reproduction. Now हम कहाँ पर आ रहे हैं? We are comes towards the sexual reproduction. As you all are knowing, sexual reproduction में क्या होंगे? Male and female gametes are produced, and these gametes you remember fuse to produce a zygote. अब यहाँ पे देखिए sexual reproduction में जो plant algae है, यहाँ पे here you can remember this sexual reproduction in terms of life cycle also. Algae, the body of algae is haploid in nature. This haploid alga, when the parents are haploid, then the gametes are produced directly. ये depend करता है whether the alga is heterothallic or hemothalic, or it is a unisexual or bisexual. Suppose this algae is a bisexual, then both the gametes are itself produced on the same thallus. So male and female gametes are produced. Now what is happening during the time of reproduction?
as the alga is, the body of alga is haploid, so these gametes are also directly produces in haploid structure. Division at the time of gamete formation in algae is take place, that is a mitosis division. After that the gametes are simplest life cycle. Gametes undergoes in fusion, and upon fusion zygote is formed. During the sexual reproduction, you remember in algae, clear है, the zygote after formation never undergoes in resting period. ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये ब्रायोफाइटा एंड एल्गी के कंपैरेटिवली क्वेश्चंस के लिए आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन में. सो इन एल्गी zygote never undergoes in resting stage or any kind of mitosis division. Immediately this diploid phase or zygote undergoes in meiosis, and upon meiosis it will lead to the production of four spores, because every time here I mentioned in my earlier lecture also, meiosis always result in the production of four cells. So these four cells here, these spores are again called as meiospores. So meiospores you already studied in algae also, fungi also. Ascospore and basidiospores are our meiospore. Similarly in algae also, zygote upon meiosis division produces meiospore, and this meiospore germinate होके किसको produce करेंगे, algae. So the diploid phase of life is only represented by the zygote. That's why when we study at the end life cycles in plant kingdom, so algae show the haplontic life cycle, because the major life cycle में जो life phases हैं, all those phases किस part में रहेंगे आपके, most of the phases in alga or during the life cycle remain in the haplontic phase or haploid phase, so that you remember. So this is general introduction है आपका for sexual reproduction. Now when the gamete, we come to the gamete formation. So in algae gametogenesis का जो phenomena है, the process of gametogenesis or gamete formation. So again I mentioned here, gametogenesis in algae is normally take place by mitosis division. Now it is clear, because the parent body is haploid. Now the gametogenesis will lead to the formation of three types of gamete, either isogamy, anisogamy and oogamy. So this thing you remember, the algae show the three modes of sexual reproduction by the formation of structurally and functionally similar gamete, isogamy and anisogamy. Gametes are functionally differ but structurally differ but functionally similar, and oogamy when the gametes are structurally and functionally differ. Example you remember, now in isogamy and anisogamy again some वहाँ इस पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं. आइसोगैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे, आइसोगैमेट्स आइदर प्रोड्यूसेस कैसे होंगे, आइदर दे आर मोटाइल गैमेट्स और दे आर नॉन मोटाइल गैमेट्स. तो इस पार्ट में आप याद रखिएगा कि व्हेन वी स्टडी अबाउट द गैमेटोजेनेसिस और रिप्रोडक्शन इन एल्गी, सो हियर यू रिमेंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी द गैमेट प्रोडक्शन इज टेक प्लेस, एंड गैमेट्स इन एल्गा आर आइसोगैमस or isogametes. Now these isogametes, number of time आप क्वेश्चन देखेंगे, the non motile isogametes are produced in which of the following. ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो नॉन मोटाइल आइसोगैमेट्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पाइरोगायरा में. तो आइसोगैमेट्स यू रिमेंबर, आइदर द आइसोगैमेट्स आर नॉन मोटाइल और द आइसोगैमेट्स कैसे होंगे अपने मोटाइल. क्लियर, नॉन मोटाइल आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन Spirogyra and motile isogametes are present in Chlamydomonas. Go through the new NCERT. Examples are changed. वो change examples भी आप याद रखिए. Second part you remember. In second part gametes again कैसे होंगे आपके, anisogametes that the structurally differ है. One gamete is small and other gamete is large, but functionally both the gametes are motile or non-motile. So anisogamy you remember, anisogamy again present in some of the members of Chlamydomonas, Eudorina. Number of examples you appear. So this part you remember, and third you remember, the third gametes are type of reproduction is oogamy, that is the male gamete is produces as antherozoid and female gamete किसके फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, एग और ओवम के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं. ओगेमी के लिए एग्जाम्पल
याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका वॉल्वॉक्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं. सेकेंड यू रिमेंबर फ्यूकस. In solving the question, don't be confused between the fucus and ficus. Ficus is a genus for banyan tree, Ficus bengalensis. Clear है? So ficus fig tree का भी genus आपका ficus ही है. So ficus is a plant and fucus you remember it is a alga. So fucus. Secondly आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं volvox, fucus and ectocarpus. Number of other alga also. So these all are आपके कैसे example है? Oogamous example है. Oogamous type means one of the most advanced type of mode of reproduction. So now is it clear to all that how the reproduction is take place for sexual reproduction? Remember this thing or keep in mind the algae is haploid in nature or the main plant body in algae is a gametophyte. एंड गैमेटोफाइट कैसे हैं? दे आर ग्रीन इन कलर, दैट्स व्हाई इन एल्गी गैमेटोफाइट कैसे हैं आपके? फ्री लिविंग. स्पोरोफिटिक जनरेशन के लिए एल्गी में जनरली क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे बिकॉज स्पोरोफाइट मींस डिप्लॉयड जनरेशन एंड डिप्लॉयड जनरेशन इन एल्गी इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द zygote. नाउ वी कम टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. एज फॉर क्लासिफिकेशन you remember that chart which is provided in the chapter. And the classification always try to study in the form of chart like structure. Classification of alga you remember mainly basically किसके ऊपर depend है? Classification is mainly based on some criteria. These criteria are first major criteria is pigmentation and that's why we are saying green alga, red alga and brown alga. So pigmentation you remember. Second, food stored, whatever kind of food is stored in alga. And third, you remember the nature of cell wall plus the presence and absence of the motile stage, that is whether the flagella are present or absent. This is another one of the important criteria for classification. Clear in ये part? अब यहाँ पे देखिए in case again I am saying if you have any difficulty, have any doubts, gametophyte, sporophyte में generally बच्चों को doubts होते हैं maximum टाइम, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो आई विल डिस्कस दिस डाउट्स इन द सेपरेट क्लास. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए अदरवाइज फॉलो द लिंक्स विच आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ऑन दोज लिंक्स ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. नाउ क्लासिफिकेशन व्हेन वी स्टडी, सो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस द एल्गी ब्रॉडली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ओनली 3 क्लासेस ही आपको स्टडी करनी है. कॉमनली आप देखिए क्लोरोफाइटा और क्लोरोफाइसी आप कहते हैं. सेकेंड इज फियोफाइसी और फियोफाइटा. एंड द थर्ड इज रोडोफाइसी और रोडोफाइटा. क्लियर है ना? एनी वर्ड टर्मिनोलॉजी यू कैन रिमेम्बर. सो रोडोफाइसी एनसीईआरटी में फैमिली वाइज ही दिया है. सो यू रिमेम्बर अकॉर्डिंग टू दैट क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. नाउ क्लोरोफाइसी नेम्स यू रिमेम्बर. क्लोरोफाइसी इट इज कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा. हियर फियोफाइसी ब्राउन एल्गा हम कह रहे हैं इसको. एंड द रोडोफाइसी आर अगेन समटाइम जो बच्चे क्या है कि कुछ बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, ये भी है. सम ऑफ द चिल्ड्रंस आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग एंड प्रिपेयरिंग थ्रू आउट द ईयर, तो उनका जो मोटिवेशन है वो कॉन्स्टेंट हुआ होगा. कुछ बच्चे जो कंस्टेंटली पढ़ रहे थे बट अभी 80 डेज का मिल गया है तो वो स्लो हो जाएंगे. जहां आपने स्लो की अपना पढ़ाई का प्रिपरेशन और मोटिवेशन, थोड़ा आप लूज हुए, आपने जितना भी थ्रू आउट ईयर गेन किया है वो इमीडिएट आप ड्रॉप डाउन होंगे. तो कहीं भी वो माइंड में मत लाइए कि 80 डेज अभी मिले हैं सो देयर इज टू मच टाइम है मेरे पास आया हमारे पास तो मैं बहुत अच्छे से एक बार और रिवाइज करूंगा. नो दैट काइंड ऑफ, ये मानिए कि 2 बार और आपको पढ़ने के लिए टाइम मिला है तो इंस्टेड ऑफ 1 टाइम आप रिवाइज करने वाले थे तो 2 टाइम यू गो थ्रू द रिविजन. ठीक है. और कुछ बच्चे हो सकता है कि 80 डेज उनको मिले हैं तो दैट्स व्हाई नाउ दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. सो फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने अभी स्टडी करना स्टार्ट किया है जस्ट फॉर दीज 80 डेज, वो आप याद रखिए रोडोफाइसी का आर
द आर ऑफ रोडोफाइसी यू रिमेंबर किस लिए रिप्रेजेंट करेगा अपना, इट रिप्रेजेंट द रेड एल्गा, बिकॉज रेड एंड ब्राउन एल्गी में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. नाउ अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया हम लेते हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया वी यूज फॉर द क्लासिफिकेशन दैट इज पिगमेंट. पिगमेंट में क्लोरोफाइसी में देखिएगा द मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी. Accessory pigments are absent. Here the chlorophyll A and chlorophyll C, and here you remember chlorophyll A and chlorophyll D is present. Clear है? After that, once we study about the pigment, then you study about the accessory pigments. Accessory pigments में आप याद रखिएगा, generally accessory pigment are not appear in chlorophycy. Accessory pigment आपका phaeophycy में है. That is called as phycoxanthine or fucoxanthine. The brown color of alga is mainly because of the fucoxanthine. Fucoxanthine आपका xanthophyll and carotenoid से mixed एक combination है. So fucoxanthine or phycoxanthine you remember, and in rhodophyceae you remember are phycoerythrine. This question is also asked. द रेड कलर ऑफ द रोडोफाइसी. टेबल अगर आप एनसीईआरटी का पढ़ेंगे तो टेबल में फाइकोएरिथ्रीन ऑल्सो में ओनली मेंशन, बट इफ यू गो थ्रू द लिटरेचर और टेक्स्ट ऑफ द रोडोफाइसी तो रोडोफाइसी में आर फाइकोएरिथ्रीन मेंशनड है. सो दैट यू रिमेंबर फॉर द रोडोफाइसी दैट इज आर फाइकोएरिथ्रीन. क्लियर है? आफ्टर दैट यू कम टुवर्ड्स द सेकंड कैरेक्टर, दैट द सेकंड कैरेक्टर फॉर क्लासिफिकेशन इज सेल वॉल composition. So cell wall composition in chlorophyceae, you remember it is made up of cellulose as well as pectose. So pectocellulose भी word use कर सकते हैं. Pectose is a outer deposition and cellulose आपका layer में कहाँ पर है, inner layer में present है. फियोफाइसी में आप आते हैं तो फियोफाइसी में आप याद रखिए सेल्यूलोज तो प्रेजेंट है. क्लियर है? अलोंग विथ सेल्यूलोज आप याद रखिए एल्जीन आप एक सेपरेटली स्टडी करते हैं तो एल्जीन आप यहाँ पे याद रखिएगा. सेल्यूलोज तो प्लांट में सभी में प्रेजेंट होगा, ये याद रखिएगा. तो सेल्यूलोज along with cellulose one specific pigment component is present, that component is called as algine. Clear है? And then rhodophyceae के लिए आते हैं तो rhodophyceae में देखिए पेक्टोज सेल्यूलोज एज इट इज प्रेजेंट, पेक्टोज एंड सल्फर एस्टर. दिस पार्ट यू रिमेंबर, सल्फर एस्टर. और कॉमनली आप कहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, and these mucopolysaccharides are used for obtaining agar agar. ऑब्जेक्टिव के लिए rhodophyceae में agar agar बिल्कुल याद रखिएगा. So agar agar is mainly obtained by the mucopolysaccharide and utilized as a solidifying agent. After cell wall next आप देखिएगा जो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देखते हैं, that next feature is food storage. इन फूड स्टोरेज यहाँ पे देखिए प्रीडोमिनेंट फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में है आपका, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. क्लियर है? बट यहाँ पर आप याद रखिए along with starch NCERT mentioned that few pyrenoids are present. So the presence of few pyrenoids, ऑब्जेक्टिव के लिए pyrenoids याद रखिएगा. presence of few pyrenoids are the important feature किसका है, important feature of the family Chlorophyceae. क्लियर है ना? आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर आप स्टडी करते हैं फियोफाइसी में. फियोफाइसी में यू रिमेंबर मैनिटॉल आपका प्रेजेंट है. सो मैनिटॉल यू रिमेंबर इज द इम्पोर्टेंट फीचर फॉर, और आप क्या कह रहे हैं, स्टोरेज फूड स्टोर्ड का पार्ट स्टडी कर रहे हैं. सो फूड स्टोर्ड में आपका क्या होगा, मैनिटॉल is mainly present, and one starch is there that is called as laminarine starch. So laminarine starch you remember, laminarine starch is present. And after that the next one you remember for Rhodophyceae, in Rhodophyceae Floridian starch is stored as a food. Now the most important phenomena criteria you remember, that is the motile stage or the presence of flagella and locomotory phase. Chlorophyceae में flagella याद रखिए 2 to 8 in number. Secondly, most important, all are equal. Clear?
So all equal flagella. Secondly, 2 to 8 number in flagella. Slowly evolution wise water के ऊपर dependency खत्म होते गई है. That's why you remember the number of flagella in as you proceed in forward direction for classification. The number of flagella are decreases. So in chlorophyce or green alga, 2 to 8 number of flagella. All the flagella are equal in size. Phaeophyce में number याद रखिएगा. In Phaeophyce only 2 flagella are present, and these flagella important feature the presence of uneven flagella. That is the 2 flagella and 2 uneven flagella are कहाँ present है? Phaeophyce में. The alga which of the following members shall completely show the absence of motile phase. ये question मिलेंगे. Absence of motile phase. Motile phase are completely absent in which class of algae? Rhodophyce. तो यहाँ पर आप याद रखिए Rhodophyce में flagella completely absent है. So that's why we are saying motile phase now completely disappears from the life cycle of the Rhodophyta. So motile phase और flagella आप कह सकते हैं यहाँ पे completely absent है. Clear है ना? This is all about the classification. Phaeophyce जब आप पढ़ेंगे तो Phaeophyce में classification पढ़ते समय यहीं पर आप लिख लीजिएगा. You write down one term that is scale. The member of Phaeophyce are present in ocean और प्रीडोमिनेंटली वो कहाँ पर है? आपके मरीन वाटर में है. एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स में बॉडी उनकी सबमर्ज्ड होती है एंड 100 मीटर्स हाइट तक वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं. सो कंटिन्यूसली डिवाइड व्हेन दे डिवाइड्स अप टू द 100 मीटर्स हाइट, सो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. दैट ब्रांच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्केल्प. सेकेंड आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा शेप ऑफ द गैमेट्स के लिए और शेप ऑफ द जूस्पोर्स के लिए. सो हियर यू रिमेंबर इन Phaeophyce गैमेट्स एंड जूस्पोर्स का जो शेप है that is the specific shape, that is the pyriform gametes, pear shaped gametes or pear shaped zoospores. So pyriform gametes and pyriform zoospore is the identical feature of Phaeophyce. Clear? For example, again you strictly go through the NCERT. Remember all the example as it is. यहाँ पे कैरेजिनीन, एल्जिनीन, ये सब प्रोडक्ट्स आप याद करिएगा. सेकेंडली अगार अगार, नॉट टू बी स्किप्ड अगार अगार. रोडोफाइसी के 2 मेंबर्स हैं, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम. So Gracilaria and Gelidium, you remember, they play a harvested mainly significantly for the production of agar agar. What is agar agar? Agar agar आप higher classes में जब पढ़ेंगे अपने courses में at that time आप study करते हैं. For this section only you remember कि इन टिश्यू कल्चर प्रैक्टिसेस जो लिक्विड मीडियम होते हैं, लिक्विड मीडियम को सॉलिडिफाई किया जाता है. देन ओनली वी कैन यूज द मीडियम फॉर द ग्रोथ और कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई. क्लियर है? सो सॉलिडिफाइंग एजेंट के फॉर्म में आप याद रखिए अगार अगार इज यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस पढ़ रहे हैं क्योंकि अदरवाइज डिटेल भी सेपरेटली स्टडी. तो ये पार्ट इतना याद रखिएगा. ऑल अबाउट द classification of algae. Clear it? Now in my next session or in next class we continue with our next topic that is Bryophyta. तब तक आप कंटिन्यू करिए पढ़ाई को अपना पूरा प्रॉपरली पढ़िए. एंड दो स्टूडेंट्स जो अगेन मैं कह रही हूँ न्यू आज से उन्होंने ज्वाइन किया होगा तो वो लास्ट क्लासेस को फिर से अगर आपको रिकॉल करना है तो यू कैन गो थ्रू द फॉलोइंग लिंक्स. तो लिंक्स को फॉलो करके लास्ट क्लासेस के वीडियोस आप प्रॉपरली देख लीजिए. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स, आई एम हियर. रिपीटेडली आई एम सेइंग